So, in our study of scientific management movement, we have reached Frederick Winslow Taylor. Now, this fellow, what is his importance particularly? जब फ्रेडरिक विंस्लो टेलर अपना काम कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज के ऊपर, तो उस टाइम पे माहौल कैसा है, इकोसिस्टम कैसा है जिसके अंदर और जिसकी वजह से वो काम कर रहे हैं. So this is the time when industrial revolution is starting to flat out in terms of growth. तो उससे जितनी पहले ग्रोथ आ रही थी वो अब नहीं आ रही. आपको याद होगा 1750s में यूके के अंदर, ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था और 1850s के आसपास यूएस के अंदर आया था. Now Frederick Winslow Taylor is essentially working in US. Around 1900, there was a flattening of growth. There were various troubles in the management aspect. मैनेजमेंट एस्पेक्ट के ट्रबल्स थे क्या? पहला एक ट्रबल होता था लेबर टर्नओवर. लेबर टर्नओवर का मतलब है कि आपकी लेबर काम छोड़ छोड़ के जा रही विदाउट एनी रीजन. सो 2 दिन काम कर रहा है कोई, फिर जा रहा है छोड़ के, फिर नई लेबर आप हायर करते हो, फिर वो चले जाता है छोड़ के. दिस क्रिएट्स too much of an effort for you. Why? Because now when you hire somebody, you train them to do a particular work. By the time they are done with the training aspect, now they are off. So ये एक बड़ी मुसीबत बन जाती है. फिर दूसरी प्रॉब्लम आ रही थी लेबर इनएफिशिएंसी. इनएफिशिएंसी क्यों कोई लेबर चाहेगी क्रिएट करना? बैक इन द डे जो सारा काम था वो हायर एंड फायर के बेसिस पे होता था. तो लेबर को कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हायर करते. जब ऑर्डर्स कंप्लीट हो जाते किसी भी इंडस्ट्रियल यूनिट के, तो लेबर को फायर कर देते. तो इस वजह से लेबर हमेशा अंडर परफॉर्म करता था, जितनी कैपेबिलिटी है उससे कम, और आपस में इस तरह से जेल कर लेते थे कि भाई अब ओवर परफॉर्म करोगे, बहुत ज्यादा एफिशिएंसी से काम करोगे तो जल्दी ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा और हमें तो दिहाड़ी ही मिलनी है, डेली वेज मिलनी है. So that daily wage concept, led to troubles of labor inefficiency. Another trouble which the industry was facing at this point of time was productivity. Because of these two above reasons, definitely there is going to be a productivity lag, but also productivity is to do with the skill of labor, the quality of machinery and materials. तो ये दो चीजों से प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा हैम्पर होती है. तो अब ये 3 एस्पेक्ट्स जो हैं आमतौर पे कैसे हैंडल किए जा रहे थे? जो इंजीनियर्स हुआ करते थे बैक इन द डे, इंडस्ट्री डिडंट हायर एनी मैनेजमेंट गुरुस, दे ओनली हायर्ड इंजीनियर्स, बिकॉज उनका काम ये होता था कि मशीनरी चला पाए, मशीनरी अगर खराब हो रही है तो उसको ठीक कर पाए. सो जो इंजीनियर्स थे उन्हीं को रोल दिया जाता था कि थोड़ी बहुत आप लेबर को भी देख लीजिए, अगर उनके कोई ट्रबल्स हैं तो ट्राई एंड सॉल्व देम. सो इंजीनियर्स वर वर्किंग एज मैनेजर्स, but then they had no specialized knowledge of management. They had no tricks up their sleeve जब भी कभी ऐसे कुछ ट्रबल हो जाते, because वो ज्यादा टाइम किस चीज में बिजी हैं? अपनी इंजीनियरिंग में बिजी हैं. Slowly, some of these engineers, like Frederick Winslow Taylor is also an engineer to start with. Some of these engineers tried to do certain observations. उन्होंने देखा कि हम लेबर को कैसे बेटर मैनेज कर सकते हैं, ऐसी तरीके निकालने शुरू किए. So to start with, some of the things are like time management. अगर उनको टारगेट दे दिया जाए, चार्ट जैसे आपने कल देखा, ठीक है, या फिर डिवीजन ऑफ लेबर. तो ये कुछ तरीके उन्होंने निकालने शुरू किए इंजीनियर्स ने कि इस तरह से करके शायद हमारी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी थोड़ी बढ़ जाए. But then this was not enough. This created not complete solutions. Then certain people started specializing in management. They left whatever they were doing as engineers and they started specializing in management. Now, Frederick Winslow Taylor is one of those people who started out as engineer, then became manager, and then started specializing in management of labor. What is good or what is unique about him is that since he had the experience of starting from the base of the pyramid, उसने shop floor level पे काम किया था. Shop floor means जहाँ पे actual सारी लेबर काम कर रही है, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से एस्केलेट होके अपनी पढ़ाई करते हुए साथ साथ में इंजीनियर बने, यहाँ से एस्केलेट होते होते
मैनेजर बने. So ये 3 बेसिक डिविजन्स होती थी back in the day. There will be a top CEO or the owner of the establishment. Then there will be managers. Then there will be engineers. And then there will be labor. इस तरह से establishment थी. अब फ्रेडरिक विंस्लो टेलर को सबका एक्सपीरियंस है except for ownership. He didn't own any enterprise. He worked as a manager. So इस वजह से वो उनकी जो ज्यादातर थ्योरी हम पढ़ेंगे वो फोकस भी यही करती है शॉप फ्लोर लेवल पे. क्योंकि अगर आपने प्रोडक्शन एफिशिएंसी ये चीजें सुधारनी है तो लेबर के ऊपर ही सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत होती है. दैट वाज हिज बेसिक अंडरस्टैंडिंग. सो विद दिस बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही क्रिएटेड हिज थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट. सो अब उन्होंने इस थ्योरी के को कहां पे लिखा, क्या उन्होंने वर्कआउट किया, लेट्स ट्राई एंड बिल्ड दैट अप. सो लिखिए, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर और एफ.डब्ल्यू. टेलर, very true to his time, believed in universal application of management principles. Universal application of management principles. That is, there is no difference. Between a public and private organization. There is no difference between a public and private organization as long as the management is concerned. और as far as the management is concerned, management दोनों की कहते हैं एक जैसी है, चाहे public है चाहे private है. However, he differed from his contemporary theorists. In terms of his focus on shop floor level. To improve production and efficiency of an organization. Production and efficiency of the organization. This was because of his unique experience. Where he started his career from the bottom of the organization. वो भी as a labor join किया, फिर धीरे धीरे आगे गया. Career from the bottom of the organization. तो उसने भी जो सारी थ्योरी थी वो उस तरह से डेवलप की. So अब उसकी थ्योरी मिलती कहाँ है? टेलर्स मैनेजमेंट थ्योरी. कोई भी टेलर का ऊपर आंसर लिखोगे ना तो उसके अंदर ये बुक्स का नाम कुछ लिखना जरूरी है कि हमें उसकी मैनेजमेंट की थ्योरी मिलती कहाँ पे. एक लाइन इसके ऊपर चाहिए. सो देखिए, टेलर्स मैनेजमेंट थ्योरी कैन बी फाउंड इन हिज वर्क्स. कोई ऐसे है, कोई बुक है, कोई जर्नल है, तो आप कंबाइंड उसके लिए जो वर्क यूज करते हैं दैट इज वर्क्स. सो कौन कौन से? कोई भी 2-3 का नाम आप याद रख लीजिए. सो फर्स्ट इज शॉप मैनेजमेंट. शॉप मैनेजमेंट का मतलब है शॉप फ्लोर मैनेजमेंट, जहां पे एक्चुअल में प्रोडक्शन होती है. ठीक है. सो दिस केम आउट इन 1903. देन पीस रेट सिस्टम. This came out in 1905.
Then there is the principles of scientific management. The principles of scientific management. This came out in 1911. Then testimony before the special committee of House of Representatives. House of Representatives. This is in 1912. तो 2-3 आप नाम याद रख लीजिए. The most important one is this one, The Principles of Scientific Management. ये उसकी बुक है. तो यहाँ से सबसे ज्यादा उसकी थ्योरी के बारे में पता लगता है. तो अगर एक लिखना हो तो बस ये लिख सकते हैं. ठीक है. ओके. अब इन सब में उसने क्या क्या कहा. 2 तरह से हम इसकी थ्योरी को स्टडी कर सकते हैं. सो एक एस्पेक्ट पे तो ये डिस्कस करता है द रीजंस फॉर फेलियर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और इनएफिशिएंसीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन. सो रीजंस फॉर inefficiency in an organization. लार्जर पार्ट इसका पहले तो इस चीज को डेडिकेटेड है इस किताब के अंदर. दूसरा है strategies through which the organization can be made successful. Organization can be made successful. तो 2 बेसिक पार्ट्स में सारी थ्योरी डिवाइडेड है. ओके. तो पहला पार्ट देख लेते हैं. What is the reasons for the inefficiencies in the organization? So लिखिए. पहला, organizations which are run on rule of thumb approach. रूल ऑफ थंब जब लिखते हैं ना उसका मतलब होता है रूडिमेंट्री एक्सपीरियंस. मैंने अपने समय पे ऐसे किया था तो तुम भी ऐसे कर लो. दैट इज अ रूल ऑफ थंब अप्रोच. So organizations being run on rule of thumb approach which eliminates standardization of job. किस किस चीजों की स्टैंडर्डाइजेशन एलिमिनेट हो जाती है. ऑफ जॉब. अगर कोई बंदा काम करने आ रहा है, आप उसको ठीक से नहीं बता रहे कि भाई तेरा एग्जैक्टली क्या काम है, तो फिर वो गेस वर्क करेगा और जो उसकी समझ में आएगा वो करेगा. तो दैट इज द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ जॉब. तो वो आप अगर नहीं करेंगे तो इट क्रिएट्स ट्रबल. देन सेकेंड स्टैंडर्डाइजेशन इज ऑफ वेजेस. इतना काम करने के इतने पैसे मिलेंगे, शक्ल दिखाने के नहीं कि मैं आ गया था. ठीक है. सो दैट इज इंपॉर्टेंट. देन थर्ड, टाइम. कितने टाइम के अंदर काम करके देना है वो भी इंपॉर्टेंट है. देन स्किल. किसी काम को करने के लिए कौन सी स्किल्स पहले आपके पास होनी चाहिए फिर ही आपको वो जॉब मिलेगी या असाइन की जाएगी, वो इंपॉर्टेंट है. देन टूल्स एंड टेक्निक्स. तो कौन से टूल्स यूज होंगे और किस टेक्निक से आप अपना काम करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है. तो इन सब की स्टैंडर्डाइजेशन जरूरी है. तो आप एक अगर रूल ऑफ थंब अप्रोच के बेसिस पे चलोगे तो ऑर्गेनाइजेशन में इनएफिशिएंसी आएगी. This is the first thing he said. Second, he stated out, is called systematic soldiering. Systematic soldiering or second thought reasoning. क्वेश्चन पेपर में ये 2 तरह से बोला जाता है इसको, सिस्टमैटिक सोल्जरिंग या फिर सेकेंड थॉट रीजनिंग. अब इसमें क्या होता है, सिस्टमैटिक सोल्जरिंग है कि जो वर्कर्स हैं वो खुद में ही आम सलाह बना लेते हैं कि भाई अगर तुम ज्यादा काम करेंगे तो फिर जल्दी निकाले जाएंगे. इससे अच्छा है कि सब मिलके धीरे धीरे आराम आराम से काम करेंगे, कोई भी ज्यादा एफिशिएंसी नहीं दिखाएगा, ताकि मैनेजमेंट को ये लगे कि हाँ ठीक ही काम चल रहा है, इतनी ही पेस पे हो सकता है, इससे तेज हो भी नहीं सकता था, इससे बेटर हो नहीं सकता था. तो सिस्टमैटिक सोल्जरिंग में वर्कर्स आपस में ऐसा एक साइलेंट पैक्ट बना लेते हैं, तो उससे ऑर्गेनाइजेशन में इनएफिशिएंसी आती है. और इसके पीछे कारण वही होता है कि जल्दी काम खत्म हो गया तो हमें निकाल दिया जाएगा, डर. सो लिखिए.
that is deliberate restriction of work by the soldiers, by the workers, deliberate restriction of work by the workers because of fear of job loss, or because of unscientific distribution of work. Unscientific distribution of work. इन दो कारणों से ये होता है. जब हम बोलते हैं अनसाइंटिफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, व्हाट डज दैट मीन? मैंने स्किल के हिसाब से, टाइम के हिसाब से मेजर्ड वर्क नहीं दिया, इस वजह से ऐसा हो रहा है. सो दैट इज द अनसाइंटिफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क. ओके, सो इन दो कारणों से देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ सिस्टमैटिक सोल्जरिंग. तीसरा जो इशू है जिसकी वजह से इनएफिशिएंसी आती है, इट इज कॉल्ड लेजी मैनेजर्स फिलॉसफी. लेजी मैनेजर्स फिलॉसफी. इसका दूसरा नाम है इनिशिएटिव एंड इंसेंटिव अप्रोच. इनिशिएटिव एंड इंसेंटिव अप्रोच. दिस इज द सेकेंड वे ऑफ डूइंग इट. अब इसमें क्या होता है, इसमें जो मैनेजर है वो थोड़ा सा लेजी है, वो सही से टास्क डिफाइन करने में इंटरेस्टेड नहीं है. उसने जॉब में बंदा रख लिया, उसको बोला ये काम कर, अब वो बंदा फिगर आउट करे कि कैसे करना है, ये उसकी कंसर्न है. तो मैनेजर सिर्फ रिक्रूटमेंट तक ही सीमित रहे और एक असाइन करके छोड़ दे और उसके बाद उसको बस पे करता रहे एज पर देयर अटेंडेंस, बजाय इसके कि वर्क आउटपुट देखे, तो ऐसे मैनेजर को बोलते हैं लेजी मैनेजर. ठीक है, सो दैट क्रिएट्स अ ट्रबल. इनिशिएटिव एंड इंसेंटिव अप्रोच इसका उल्टा है कि मैनेजर खुद इनिशिएटिव ले, वर्कर खुद इनिशिएटिव ले कि बेटर काम होगा और उसके बेसिस पे दोनों को इंसेंटिव मिले. ठीक है, सो लिखिए आफ्टर रिक्रूटमेंट, if a worker is assigned a unit, and paid as per their attendance, then the manager simply has left the worker, to do the job on his own. On his own कहने का मतलब क्या है कि जो अपने पैरामीटर्स ऑफ वर्क है वो भी वर्कर डिफाइन कर रहा है, आप वो डिफाइन नहीं कर रहे उसके लिए. टूल्स एंड टेक्निक्स भी वर्कर डिफाइन कर रहा है कि मैंने कैसे काम करना है. टाइम भी वर्कर डिफाइन कर रहा है, आप डिफाइन नहीं कर रहे. तो ऐसे पैरामीटर्स अगर आप छोड़ देंगे तो फिर मैनेजर के लेवल पे करने का काम ही क्या रहा. आगे लिखिए, देयर इज नो रिसर्च डन बाय द मैनेजर, on the parameters of work, hence the work takes place in an unscientific manner. Based on workers' own initiative and interest. वर्कर जैसे अपना इनिशिएटिव लेके कोई बढ़िया कर दे तो कर दे, उसका खुद का इंटरेस्ट है तो वो करेगा. मैनेजर अपना टास्क ठीक से नहीं कर रहा. ये तीन मेजर कारण हैं जिसकी वजह से ट्रबल आता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इनएफिशिएंसी क्रिएट होती है. इट कैन बी द रूल ऑफ थंब अप्रोच, जिसमें आप साइंटिफिकली सब चीजें स्टैंडर्डाइज नहीं कर रहे. दूसरा है सिस्टमैटिक सोल्जरिंग, इसमें भी वर्कर्स डेलिबरेटली वर्क रिस्ट्रिक्ट करते हैं. तीसरा है लेजी मैनेजर फिलॉसफी, जिसमें मैनेजर खुद ढंग से काम आउटलाइन करके नहीं दे रहा. ये तीन कारण है.
अब टेलर के अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ हिज थ्योरी। ओके, सो इसके लिए इसने 4 प्रिंसिपल्स दिए जो आपने कल के लेक्चर के अंदर लिखे थे। तो इन शॉर्ट इन 4 प्रिंसिपल्स को अगर लिखना हो तो फर्स्ट प्रिंसिपल इज साइंस ऑफ वर्क। साइंस ऑफ वर्क किस पे काम करेगा? एसेंशियली स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ जॉब विद दिस टाइम, स्किल, टूल्स एंड टेक्निक, ये सब करने के लिए साइंस ऑफ वर्क है। दूसरा काम है साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स। तो यहाँ पे लेजी मैनेजर नहीं है, वो वर्कर को साइंटिफिकली सिलेक्ट भी कर रहा है पर उनको ट्रेन कर रहा है कि आपको अपना काम ऐसे करना है। देन थर्ड प्रिंसिपल इज कमिंग टुगेदर of science of work, basically first and second, science of work and scientifically selected worker, scientifically selected worker, इन दोनों का साथ में काम करना। चौथा का इसमें हमारे पास प्रिंसिपल है विलफुल कोऑपरेशन बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट। ये 4 बेसिक प्रिंसिपल्स इसने दिए। अगर कहते हैं ये फॉलो करेंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी बढ़नी शुरू होगी। अब बेसिकली इन्हीं चीजों के ऊपर एक तरह से ये सारे प्रिंसिपल सुधार का काम करते हैं। ठीक है, दिख रहा है अब आपको ये क्लियरली कि साइंस ऑफ वर्क कैसे इसके ऊपर सुधार का काम करेगा। सो लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग कि साइंस ऑफ वर्क मींस दिस, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग मींस यू आर वर्किंग एंटीथेटिकल टू दिस, दिस इज एन इंस्ट्रक्शन कि ब्रिंग देम टुगेदर एंड देन देयर शुड बी विलफुल कोऑपरेशन। इसमें से जो समझने वाला काम है वो है विलफुल कोऑपरेशन। लेकिन before that I would want to outline some more things here। तो 4 तो ये प्रिंसिपल्स दे दिए टेलर ने। उनके अलावा इन्होंने जो डिविजन ऑफ वर्कर है इसके ऊपर भी काम करने की कोशिश की कि भाई छोटे छोटे स्ट्रैटेजीज साथ में दी। लेट मी गिव दैट स्ट्रैटेजीज आल्सो। 4 प्रिंसिपल दे दिए, फिर स्ट्रैटेजीज दी। स्ट्रैटेजीज में क्या किया? फर्स्ट ही सेड देयर शुड बी टाइम एंड मोशन स्टडीज। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। टाइम एंड मोशन स्टडीज, ये थोड़ा सा ना बंदों को रोबोट्स की तरह ट्रीट करना चाहता है कि आप अगर सपोज ये पेन असेंबल करना है तो ये पेन असेंबली के लिए आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप इज दिस, सेकंड स्टेप इज दिस, थर्ड स्टेप इज दिस। इस लेवल तक इसने आउटलाइन कर दिया। हम बोलते हैं ना कुछ लोग होते हैं ओसीडी, सो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, तो टेलर इज नोन फॉर दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ थिंग। सो हर चीज को टाइम वाइज मैनेज किया कि अच्छा ठीक है, तुम ये पेन असेंबल करना चाहते हो, पहले तुम इसका आउटर शेल लोगे, उसमें इतना टाइम लगेगा। दूसरा स्टेप इसमें बटन्स लगाओगे, इतना टाइम लगना चाहिए। तीसरा स्टेप इसके कैप लगाओगे, इतना टाइम लगना चाहिए। इस लेवल तक डिफाइन कर दिया और फिर वर्कर्स को उसी तरह से ट्रेन किया गया। तो एक तरह से मशीन का काम बंदे से ले रहे हैं। सो दैट इज टाइम एंड मोशन स्टडीज। सो लिखिए, this was targeted at this was targeted at eliminating unnecessary movements, कि आपको कहीं पे भी इधर उधर हिलते जुलते काम नहीं करना, उसमें आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। unnecessary movements, okay, and sequencing sequencing the work with respect to time, sequencing the work with respect to time in a step by step manner, in a step by step manner, so as to increase efficiency of production, so as to increase the efficiency of efficiency of production। दूसरा, वेज पेमेंट सिस्टम।
दूसरी स्ट्रैटेजी जो इसने दी, दैट इज कॉल्ड द वेज पेमेंट सिस्टम। वेज पेमेंट सिस्टम में इन्होंने सिंपल सी बात ये है कि यू शुड पे फॉर द वर्क दैट इज डन एंड नॉट फॉर द अटेंडेंस। जो काम कर रहा है, जितना काम किया उसके हिसाब से उसको पैसा मिले, ना कि सिर्फ शक्ल दिखाने के लिए कि आई टर्न्ड अप फॉर वर्क। कितना किया पता नहीं। दैट इज, लिखिए, पेइंग फॉर वर्क एंड अवॉइड पेइंग फॉर अटेंडेंस। पेइंग फॉर अटेंडेंस। अब ये करने का तरीका क्या है? जब तक आप काम को समय के साथ नहीं बांध देते, आप टारगेट्स नहीं देते कि ये इतना वर्क इतने टाइम में होना चाहिए, तब तक ये आपको नहीं पता चलेगा। सो इसके लिए तरीका क्या बताया, लिखिए, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिफरेंशियल वेज पेमेंट सिस्टम, डिफरेंशियल वेज पेमेंट सिस्टम और पीस रेट सिस्टम। पीस रेट सिस्टम, दो नाम और हैं इसके। बात वही है, अलग अलग टेक्स्ट में अलग अलग तरह से लिखा गया। क्या है इसके अंदर, देखिए, एवरी वर्कर should be entitled to, so according to Taylor, every worker should be entitled to an extraordinary wage। दो तरह के वेज सिस्टम्स बनाते, an extraordinary wage and an ordinary wage। extraordinary wage and ordinary wage as per his performance, as per his performance, the worker who completes the target, the worker who completes the work target within stipulated time, इतने टाइम में करना है, within stipulated time, shall receive extraordinary wage, shall receive extraordinary wage। ठीक है। While a worker achieving the target, achieving the target beyond time limit, beyond time limit should get ordinary wage। तो एक तरह से इंसेंटिवाइज किया गया कि अगर आप विद इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम काम कर लोगे तो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेज या एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। Hence it became, hence it became a motivating factor, hence it became a motivating factor जहां पे सिर्फ पैसे की बात हो ना, उसको बोलते हैं मोनो मोटिवेशन। मोनो मतलब एक ही चीज के बेसिस पे मोटिवेशन है, वो है पैसा। मोनो मोटिवेशन। ठीक है। तो क्लासिकल थ्योरिस्ट जितने भी हम पढ़ेंगे पुराने टाइम के, वो इसी बात को करते हैं कि मोनो मोटिवेशन, सिर्फ मनी के लेवल पे एक ही चीज के बेसिस पे आप मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, आगे लिखिए, हाउएवर देयर इज नो रूम फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ टारगेट। टारगेट इसने भी अचीव करना है, टारगेट इसने भी अचीव करना है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई टारगेट अचीव नहीं कर रहा और उसको पैसे मिल रहे हैं। काम करेगा तो पैसे मिलेंगे। ठीक है। देयर इज नो रूम फॉर नॉन अचीवमेंट ऑफ टारगेट। Hence it became, hence it became an individual performance linked, individual performance linked wage payment system, individual performance linked wage payment system। अगर आप बेटर करोगे तो आपको ज्यादा मिलेगा। तो बहुत सारे लोगों ने जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था तो इस तरह की थ्योरीज को अपनाया। थर्ड जो स्ट्रेटजी इसने दी बेटर ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन की या एफिशिएंसी के लिए, दैट इज कॉल्ड एज फंक्शनल फोरमैनशिप।
फंक्शनल फोरमैनशिप। फोरमैन कौन होता है? किसी वर्कशॉप में जाते हैं, फोरमैन उसको बोलते हैं जिसको सारा काम करना आता है, जो सीनियर होता है सबका, है ना। अब इन्होंने सिर्फ फोरमैन से हटा के उसको बोला फंक्शनल फोरमैनशिप होनी चाहिए। एक बंदे के हाथ में सारी पावर्स ऐसे मत दो कि वो लेबर का दादा टाइप बन के घूमे। उसके बजाय अच्छा ये होगा that you should create functional foremanship. What is the meaning of that? So he said there should be two types of foremen. पहली बात तो फोर प्लानिंग फोरमैन, बुढ़े लोग जिन्होंने 10 साल से काम कर रहे हैं, अब सारा कुछ पता है कि कैसे करना होता है, लेकिन एग्जैक्टली कर नहीं सकते, उनके पास पूरा एक्सपीरियंस है। So they are planning foremen, and then he said that there should be four execution foremen. Four execution foremen. जो प्लानिंग वाले हैं इनमें कौन कौन से हैं? देयर इज रूट क्लर्क, मैं समझाता हूं अभी इनका काम क्या क्या है। देन देयर इज इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, थर्ड पर्सन इज द टाइम क्लर्क, एंड फोर्थ पर्सन इज द शॉप डिसिप्लिनरियन। शॉप डिसिप्लिनरियन। ये चार तरह के प्लानिंग फोरमैन। फिर चार एग्जीक्यूशन फोरमैन, दे आर कॉल्ड एज गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्शन बॉस। इंस्पेक्शन बॉस। सो शॉप फ्लोर लेवल पे जो वर्कर काम कर रहे हैं उनके ऊपर इस तरह से फोरमैन होने चाहिए। ये फोरमैन भी चार चार की कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, ठीक है। उनके ऊपर फिर मैनेजमेंट बैठी है, इस तरह से स्ट्रक्चर उसने कंसीव किया। सो अब ये क्या करेंगे? रूट क्लर्क जो है इसकी ड्यूटी है ये तय करना कि काम होगा कैसे, स्टेप बाय स्टेप हर चीज का साइंटिफिक एनालिसिस करना है, इसका काम है। तो साइड में लिख लीजिए, पेपर में कभी भी इनको लिखना नहीं पड़ेगा, ना ही आपको कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज फंक्शनल फोरमैनशिप, पूरा एक्सप्लेन करो। नो, यू विल जस्ट यूज इट एज वन ऑफ द स्ट्रेटजीज। आप वहां पे सिर्फ फंक्शनल फोरमैनशिप लिखेंगे, काम खत्म हो जाएगा। ये जो आगे का काम हम कर रहे हैं, दिस इज सिंपली फॉर अंडरस्टैंडिंग। सो यू डोंट हैव टू क्रैम कि ये चार तरह के रूट क्लर्क और ये वो इनके नाम क्या हैं और चार तरह के प्लानिंग के नाम क्या हैं। आप सिर्फ इतना भी लिख के आ जाओगे कि चार प्लानिंग चार एग्जीक्यूशन, काम खत्म हो गया। आंसर राइटिंग में you don't need to, and you should not write the entire names unless specifically asked in the question, and such kind of question is generally not asked in UPSC, ठीक है। तो सिर्फ इनका मतलब समझना जरूरी है, इसलिए क्योंकि अगर आप कुछ लिख रहे हो और आपको पता नहीं क्या लिख रहे हो तो फिर दैट्स रॉन्ग। सो व्हाट इज रूट क्लर्क, लिखिए साइड में नोट कर लो। इट्स लाइक मोर लाइक वर्ड मीनिंग डिक्शनरी फॉर इट। So root clerk has the responsibility of undertaking. Root clerk has the responsibility of undertaking scientific analysis of work. Scientific analysis of work. So हर डायमेंशन से वो साइंटिफिक एनालिसिस करेगा, कितना टाइम लगेगा, कौन सी टेक्निक, क्या टूल्स यूज किए जाएं, एवरीथिंग, एंड thereby completely defining the work. And thereby completely defining work. एग्जैक्टली करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप वो सारा डिफाइन करना इसका काम है। सेकेंड पर्सन इज द इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। अब एक बार जब रूट क्लर्क सारा कुछ डिफाइन कर देगा कि भाई ये करना है काम में, हमने दिस इज स्टेप 1, दिस इज स्टेप 2, दिस इज स्टेप 3, विद इन स्टेप 1 यू हैव टू डू दीज टास्क्स, एवरीथिंग इज डिफाइंड। ये वाले टूल्स लगेंगे विद इन स्टेप 1, ये टेक्निक करनी है, ये रॉ मटेरियल चाहिए, ये वर्कर स्किल चाहिए, एवरीथिंग इज डिफाइंड। नाउ इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क उसका काम आता है। So लिखिए, this clerk converts the ideas of root clerk into understandable instructions for workers. Understandable instructions for workers.
तो एक कार्ड बन जाएगा हर वर्कर का। तुमने भाई सुबह आके ना ये 4 काम करने हैं हर वर्कर के लिए। इस जगह पे इस यूनिट नंबर 1 पे तुम काम कर रहे हो और तुमने आके ये 4 काम करने हैं। जैसे आप जिम जाते हो तो कोच आपकी एक्सरसाइजेस नहीं डिफाइन करके दे देता, तो जाके आप अपना कार्ड देख लेते हो रोज कि आज मेरी कौन कौन सी एक्सरसाइजेस है, तो वो सारी आपको जाके उस दिन पर्टिकुलरली करनी है। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का भी वैसा ही कुछ काम है। हर वर्कर का एक कार्ड बन जाएगा, तुमने वही आना है सुबह, ये काम करना है, मंडे ट्यूसडे को तुमने आना है, ये काम करना है, लाइक दिस। थर्ड पर्सन इज टाइम क्लर्क। अब इसकी जिम्मेदारी है टू कीप एन अकाउंट की कौन सा वर्कर गिवन टाइम। हाँ जी, Sir, कुछ पूछना चाहते हो? intersection card clerk converts. Yes, sir. The intersection card clerk converts the. So instruction card clerk converts the planning or the ideas of route clerk into understandable instructions for worker. Understandable instructions for worker. Okay. Next is time clerk. So what does he do? So time clerk का job है to keep an account of the time which is taken by every worker in completing any work. ठीक है, तो वो सिर्फ ये देखेगा कि कितनी देर में किसी बंदे ने कितना काम पूरा किया, क्योंकि हमारे पास जो पेमेंट का सिस्टम है दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड ऑर्डिनरी वेज। तो जो बिफोर टाइम करेगा उसको जल्दी ज्यादा पैसा देना है। सो लिखिए, सो कीप्स एन अकाउंट ऑफ टाइम, keeps an account of time within which the work is completed. तो टाइम अकाउंटिंग क्यों करनी है? फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेज पेमेंट। ऑर्डिनरी के लिए तो करने की जरूरत नहीं है ना, जिसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेज देना है उसके लिए करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शॉप डिसिप्लिनरियन। इसका काम क्या है? सो ही डज द personnel management at shop floor level. That means what? Hire or fire the worker. इसका काम ये है। Any kind of grievance redressal, कि वर्कर्स की कोई प्रॉब्लम है तो उसको सुनना। देन एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट, तो वो इसका काम है। सो ये पर्सनल मैनेजमेंट करता है शॉप डिसिप्लिनरियन। किसी को रखना है, किसी को निकालना है, कोई किसी की पे बढ़ानी है, कोई किसी को काम पे नहीं आ सकता, छुट्टी देनी है, तो वो सारे काम शॉप डिसिप्लिनरियन के। तो ये 4 प्लानिंग फोरमैन हो गए। अब ये गैंग बॉस एक्सेट्रा ये क्या करते हैं? सो गैंग बॉस क्या है, देखिए, is responsible for maintaining the overall environment, responsible for maintaining overall environment of shop floor, overall environment of the shop floor. बेसिकली क्या करेगा? किसी को भी कुछ पूछना है, कोई भी एडवाइस लेनी है, वो एडवाइस देगा। कोई टूल्स, टेक्निक्स, टाइम फ्रेम, कुछ भी जो एस्टैब्लिश हो चुका है उसके बारे में समझाना है तो वही समझाएगा। ठीक है। देन स्पीड बॉस, so sets the time limit for completion of targets. और अगर किसी से हो ना पा रहा हो तो डेमोन्स्ट्रेट भी करके दिखाना है कि भाई ऐसे हुआ। Sets the time limit for completion of targets and demonstrates the same. इस तरीके से करोगे तो विद इन टाइम लिमिट कर पाओगे, वो इसको करके दिखाना है। देन रिपेयर बॉस, सो इट्स मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी। तो इतनी सारी मशीनरी अब यूज हो रही है कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के अंदर, तो उसके लिए कोई मशीनरी खराब हो जाए तो इसने देखना है। मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी एंड हाइजीन, ये इसका काम है। देन इंस्पेक्शन बॉस, इंस्पेक्शन बॉस का काम है ये देखना कि प्रोडक्शन पर यूनिट ठीक से हो रही है या नहीं, फिर क्वालिटी ठीक है या नहीं। सो
देखिए, टू इंश्योर proper production per unit as well as quality of production. Proper production per unit as well as quality of production. तो ये तो होगी वोकैबुलरी. हमें ये वोकैबुलरी पेपर में नहीं बतानी पड़ेगी, ये तो सिर्फ आपके समझने के लिए है. आपको बात करनी है फंक्शनल फोरमैनशिप की, फॉर प्लानिंग, फॉर एग्जीक्यूशन. बस यहां तक काम खत्म हो जाता है पेपर के अंदर, इससे ज्यादा नहीं बताना होता. अब जो क्वेश्चन इसमें ज्यादातर यूपीएससी ने पूछा वो ये कि इस स्ट्रक्चर के ऊपर जो हमने अभी ड्रॉ किया था ना, लेट्स ट्राई टू ड्रॉ दैट मोर क्लियरली, कि देयर इज अ मैनेजमेंट एट द टॉप, then there are functional foremen somewhere in the middle, then there are workers who are working at the shop floor level. So ये 3 लेवल्स ऑर्गेनाइजेशन के टेलर के हिसाब से हैं. इनके ऊपर टेलर ने एक प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन. ये यूपीएससी में आता है. प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन क्या है? ये सिंपली ये कहता है कि भाई जब तो सारा कुछ नॉर्मल चल रहा है तो मैनेजमेंट को इंटरवीन करने की जरूरत नहीं है. फंक्शनल फोरमैन ही सारा काम देखते रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ठीक चल रहा है या नहीं. जब ओवर प्रोडक्शन हो रही है या अंडर प्रोडक्शन हो रही है उस टाइम पे ही मैनेजमेंट इंटरवीन करेगी. बाकी सब टाइम पे वर्कर्स फंक्शनल फोरमैनशिप के गाइडेंस के अंडर अंडर काम करते रहेंगे, मैनेजमेंट को इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है. सो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन. सो देखिए, actual managers of work at shop floor level, actual managers of work at shop floor level are the functional foremen, and the manager, or you can say, and the management should not intervene with the foreman's responsibility of work. Management should not intervene in the foreman's responsibility of work unless and until the workers are overachieving or underachieving the target. So exceptional circumstance जब होंगे तभी आपको इंटरवीन करना है. ओवर अचीवमेंट का मतलब क्या है? ओवर अचीविंग द टारगेट कहने का मतलब है कि टारगेट ठीक से सेट नहीं किया गया. जो रूट क्लर्क ने टारगेट सेट किया, जिसने पूरी प्लानिंग की, उसको ठीक से प्लानिंग नहीं करना है, इसीलिए ज्यादा प्रोडक्शन हो पा रही है. अंडर अचीविंग द टारगेट का मतलब क्या है? ये भी रूट क्लर्क प्लानिंग वालों की गलती है, अंडर अचीवमेंट हो रहा है. या फिर कहीं गैंग बॉस, स्पीड बॉस ठीक से काम नहीं कर पा रहे, फिर कहां पे इंटरवीन करने की जरूरत है वहां पे वो करेंगे. So if the workers are overachieving or underachieving the target, then they have to work out in this fashion. ठीक है, only then they should interfere. Otherwise they should not interfere. So आगे लिखिए, Taylor's philosophy of functional foremanship combined with principle of exception. जब इन दोनों को इकट्ठे कर दिया जाता है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? Combined with principle of exception consists of two mutually opposite things. कौन सी? One is centralization
and the other is decentralization. वो कहता टेलर के सिस्टम के अंदर सेंट्रलाइजेशन भी है, डिसेंट्रलाइजेशन भी है। कैसे? अगर आप डिसेंट्रलाइजेशन देखो तो मैनेजमेंट और फोरमैन के बीच में डिसेंट्रलाइजेशन है। क्यों? क्योंकि पावर एक्चुअली फोरमैन को दे दी, एक्चुअल मैनेजमेंट वो कर रहे हैं ऑन अ टाइम टू टाइम बेसिस। और फोरमैन और वर्कर के बीच में देखो तो देयर इज सेंट्रलाइजेशन। क्यों? वर्कर जो भी कर रहा है, एक वर्कर जो भी कर रहा है वो 8 फोरमैन मिलके तय कर रहे हैं, वर्कर खुद तय नहीं कर रहा। सारी पावर जो है विद रिस्पेक्ट टू वर्क, कैसे होगा, कब होगा, कितनी स्पीड से होगा, so it's all decided by the functional foreman. So this way there is centralization in terms of worker and foreman and decentralization in terms of management and foreman. Okay, so देखिए there is centralization with respect to workers and foremen because there is no choice on workers part, no choice on workers part with respect to work, with respect to work. तो वो सारी चॉइस किसके पास है, कौन एक्सरसाइज कर रहा है? फंक्शन फोरमैन। डिसेंट्रलाइजेशन कहां पे? लिखिए ऑन द अदर हैंड with respect to management and foremen, with respect to management and foremen there is decentralization, there is decentralization since the manager has given the responsibility and powers to foreman. Management has given responsibility and power to foreman. तो वो डिसाइड कर रहे हैं responsibility and power to foreman in normal circumstances. एक्सेप्शनल में तो मैनेजमेंट इंटरवीन करेगी बट नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नहीं करेगी। सो ये तीसरी स्ट्रैटेजी फंक्शनल फोरमैनशिप की है। चौथी जो स्ट्रैटेजी इसने दी दैट इज मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन यूपीएससी में दूसरा जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर के ऊपर वो मेंटल रेवोल्यूशन है। पहला जो क्वेश्चन आता है वो इन जनरल इसकी थ्योरी के ऊपर आ जाता है। ठीक है, सो मेंटल रेवोल्यूशन का जो ये इसका कॉन्सेप्ट है ये हम बार बार यूज करेंगे आगे भी, तो इसलिए ध्यान से देखिए। बड़ी सिंपल सी बात है, जो आप पहले प्रिंसिपल्स में भी देखा है हो तो वैसा ही है। इट इज सिंपली willful cooperation between management and workers, willful cooperation between managers and workers। लेकिन इसको थोड़ा सा उसने बताया है कि अचीव कैसे कर सकते हो आप, इसीलिए स्ट्रैटेजी है हाउ टू अचीव दिस willful cooperation। So what is the meaning and what is the significance of this? So लिखिए generally both managers and workers, generally both managers and workers feel bad about each other, since the manager tends to exploit worker, since the manager tends to exploit the worker and vice versa। वर्कर्स भी कम नहीं होते, they also try to exploit the managers अगर सॉफ्ट हो तो। Thus the concept appears idealistic, देखने में लगता है कि यार ये विलफुली अपने आपस में कैसे कोऑपरेट कर लेंगे, बट टेलर थिंक्स इट इज प्रैक्टिकल। टेलर ने इसके लिए कुछ स्ट्रैटेजी दी है। तो लिखिए however Taylor has given
a strategy. Taylor has given a strategy to achieve mental revolution. To achieve mental revolution. According to him, दो तीन चीजें हैं. When there will be a change in understanding of the work. When there will be a change in understanding of the work and the organization by both worker and manager. Understanding of work and the organization by both worker and manager. Whereby they are equal stakeholders. Whereby they are equal stakeholders in the success of the organization. Equal stakeholders in the success of the organization. And both can stand to benefit. And both can stand to benefit from the organization. तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस में दोनों का सक्सेस है. दूसरी स्ट्रेटजी इसने क्या दी? मैनेजर्स एंड वर्कर्स शुड फोकस. Managers and workers should focus on increasing the surplus. On increasing the surplus rather than sharing the surplus. Rather than sharing the surplus. आमतौर पे क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है, वर्कर कर रहे हैं, तो फिर वो बोनस की डिमांड करते हैं वर्कर्स. दैट इज द स्ट्रेटजी ऑफ शेयरिंग द सरप्लस. शेयर तो हो ही जाएगा, अगर उसके इंक्रीजिंग पे ज्यादा फोकस करें तो अच्छा है, ये टेलर कह रहे हैं. सो दिस philosophical argument, can ensure maximum prosperity for the employer, जो हमने पहले भी लिखा, maximum prosperity for the employer and the employee. Okay. और टेलर ने इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है मेंटल रेवोल्यूशन को. वो कहता है, अकॉर्डिंग टू टेलर, लिखिए, अकॉर्डिंग टू टेलर, the tools and techniques of scientific management. और ये स्टेटमेंट लिख के क्वेश्चन आता है मेंटल रेवोल्यूशन के ऊपर. Tools and techniques of scientific management are only necessary but not sufficient ingredients. Are only necessary but not sufficient ingredients for successful organizational management. For successful organizational management. तो फिर sufficient कैसे बनेगा? मेंटल रेवोल्यूशन के साथ. सो आगे कंटिन्यू करके लिखिए, इट इज द मेंटल रेवोल्यूशन. It is the mental revolution of both the worker and management. Of both the worker and management, which will make it sufficient. Which will make it sufficient. So ये टेलर की ओवरऑल थ्योरी है. पहले पार्ट में वो बताता है कि ऑर्गेनाइजेशंस क्यों इनएफिशिएंट रहती हैं. सो रूल ऑफ थंब, सिस्टमैटिक सोल्जरिंग, लेजी मैनेजर्स फिलॉसफी. दूसरे पार्ट में उसने 4 प्रिंसिपल्स दिए और 4 स्ट्रैटेजीज दी.
principles for making it successful, strategies, time and motion, wage payment system, functional foremanship and mental revolution. अब इसकी जो थ्योरी है, it had a lot of impact upon the organizations in US as well as abroad. So what was the impact? Question लीजिए. Discuss the impact of Taylor's scientific management movement. Discuss the impact of Taylor's scientific management movement. इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, 150 वर्ड 250 वर्ड में लिखना होगा. So लिखिए आंसर. Taylor's theory influenced both public and private sector. Both public and private sector. Okay. And its impact was not only limited to US. Impact was not only limited to US or USA, but was also adopted beyond America in Lenin's Russia, USSR, under the name of Steknoviet movement. तो वहां पे टेलर की फिलॉसफी को स्टेक्नोविएट मूवमेंट कह के, साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट बेसिकली इन रशियन स्टेक्नोविएट मूवमेंट. सो दैट्स हाउ इट वाज गोइंग देयर. सो आगे लिखिए. इन यूएस हेनरी फोर्ड of Ford Motors applied Taylor's model to establish largest automobile company, of the time. The success of his model was well documented by Hollywood. Hollywood में movies बनी. Well documented by Hollywood in movies like Cheaper and Modern Times. 2 movies हैं जहाँ पे हॉलीवुड ने डॉक्यूमेंट्री सॉर्ट ऑफ क्रिएट की इसके लिए, जहाँ पे टेलर की थ्योरी के इफेक्ट दिखाए गए. देन वाटरटाउन आर्सेनल and Moray Island Shipyard were 2 major federal establishments. Federal establishment मतलब public sector in USA. Federal establishments which adopted Taylor's philosophy. However, सब कुछ अच्छा है ऐसा नहीं था. However, in 1910, the Interstate Commerce Union started having complaints इंटरस्टेट कॉमर्स यूनियन एक तरह से लेबर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जैसा है यूएस के अंदर. ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है, यूएस के अंदर इंटरस्टेट कॉमर्स यूनियन है. सो स्टार्टेड हैविंग कंप्लेंट्स फ्रॉम वर्कर यूनियंस against Taylorism. Started having complaints from worker unions against Taylorism.
with respect to workers having no choice. ये सारी choice तो foreman exercise है. With respect to workers having no choice with respect to work. मशीन की तरह काम कराया जा रहा है. In 1912, the Army Appropriation Act in USA, Army Appropriation Act in USA restricted use of Taylorism, restricted the use of Taylorism in government arsenal industry. In government arsenal industry. So एक तरह से कुछ आवाजें इसके खिलाफ भी आई. However, despite these minor aspects, Taylorism still continues. Taylorism still continues to be used in manufacturing industry which is the evidence of its timeless impact or ongoing impact upon industrial management. Okay. अब दूसरा जो क्वेश्चन टेलर पे सबसे ज्यादा आता है, जैसे मैंने आपको कहा, दैट इज मेंटल रेवोल्यूशन. तो वहां पे ये स्टेटमेंट लिख देंगे, टूल्स एंड टेक्निक्स आर ओनली नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट. तो इसमें जो टेलर की फिलॉसफी है, अगर मैं टेक्सचुअल मैनर में कहूँ तो मैंने आपके नोट्स के अंदर भी दे रखा है उसमें. तो टाइम स्टडी, फंक्शनल फोरमैनशिप, ये सारे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं. आपको 2-3 ही पता होने चाहिए, बहुत है. आप लिखा होगा वहां पे. करने को तो इन्होंने, टेलर ने कटिंग टूल्स की स्टैंडर्डाइजेशन की, जो कोयला खदानों में इधर से उधर रखा जाता है उसमें उसकी स्टैंडर्डाइजेशन करने की कोशिश की, एंड सो ऑन. ठीक है. सो लेट्स नॉट कंफ्यूज आवरसेल्फ विद दैट टू मच. तो जितना आप उसके बारे में यहाँ पे लिखा है कि हाँ मेंटल रेवोल्यूशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, दैट वुड डू. तो इम्पैक्ट के ऊपर अब आई एम कंटिन्यूइंग. तो उसमें 5 बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपने मेंशन करने हैं स्टोरी लाइन के अलावा. तो वो क्या है? फर्स्ट वन, इम्पैक्ट के अंदर ही लिखना है, इट ब्रॉट अबाउट more effective use. It brought about a more effective use of labor, material, and managerial capabilities. Effective use of labor, material, and managerial capabilities. So this is the first one. Second impact is SMM, a scientific management movement, placed emphasis on elimination of waste. Emphasized or placed emphasis on elimination of waste. किस तरह की waste? In time, effort, material, etc. क्योंकि tools and techniques आप standardize कर रहे हो तो waste अपने आप eliminate होता रहेगा. Third, it focused more upon harmony. It focused more upon harmony between workers and management rather than discord. Harmony between workers and management rather than discord.
Taylor was in favor of establishing a joint commission of workers and managers to achieve productivity, comma, solve problems and redress grievances, achieve productivity, solve problems and redress grievances. This marked the beginning of participative management in the industry. पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट का मतलब क्या है? वर्कर और मैनेजर दोनों मिलकर मैनेजमेंट कर रहे हैं. So workers are participating in management. Okay. Later made famous, इसी को कंटिन्यू करके लिखो. Later made famous under Whitelaism. Actually, there was a Whiteley Committee report. जिसने ये सजेस्ट किया था कि वर्कर्स और मैनेजर्स के बीच में पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट होनी चाहिए. ठीक है. तो यूपीएससी ने क्वेश्चन डाला, हाउ डज टेलर्स फिलॉसफी रिप्रेजेंट वाइटलेइज्म, और व्हाट इज वाइटलेइज्म? सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा. तो वाइटलेइज्म कुछ नहीं है, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट की बात है. आगे जाके इसके और भी एग्जांपल्स पढ़ेंगे. जहां जहां पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट आता जाएगा तो आप उसको और ज्यादा डेवलप कर लेंगे. So at present stage, he was the first one to suggest such joint commission being formed. That's why it is said so. Fourth point, Taylor constitutes or constituted scientific management movement as a mutually beneficial exchange. For workers and management. दोनों का फायदा है इसको करने में. Fifth, in his book Shock Management, his emphasis shifted from efficiency to social implications of scientific management. So he did focus upon the human side of management as well. So okay, thus focusing upon the human side of management as well. Okay. So ये है impact. Next question is, discuss the relevance of Frederick Winslow Taylor in today's industrial management. तो आप टेलर की बेसिक इंट्रोडक्शन पहले तो दे देंगे, उसके बाद आपने इसमें 3 बातें मेजरली करनी है जब भी आप टेलर की रेलेवेंस डिस्कस कर रहे हो. पहली बात क्या है? मेन concerns of Taylor were efficiency, quality, and organizational success.
along with maximum prosperity of both the workers and the managers. Of both workers and managers. तो ये इसके मेन कंसर्न्स है. क्या ये आज रेलेवेंट है या नहीं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए? बिल्कुल है. सो बस यही लिखना है, विच आर स्टिल रेलेवेंट फॉर ईच ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है. एफिशिएंसी, क्वालिटी, organizational success along with maximum prosperity for both workers and the management. दूसरा पॉइंट आपने इसके अंदर लिखना होता है, एक पीटर ड्रकर, ही इज द कंटेम्पररी मैनेजमेंट थ्योरिस्ट. सो पीटर ड्रकर, इसकी एक लाइन है, लिख लीजिए कोट्स में. The underdeveloped and developing countries, the underdeveloped and developing countries are now reaching the stage, countries like India are now reaching the stage where they need tailor and scientific management movement, where they need tailor and scientific management movement okay. Drucker claims that the central theme of Taylor's work was to substitute industrial warfare. इंडस्ट्रियल वॉरफेयर का मतलब क्या है? वर्कर और मैनेजर आपस में लड़ रहे हैं. विद industrial harmony, which is still relevant today. Third, Taylor is characterized more as a synthesizer rather than an innovator of scientific management. ऐसा क्यों कहते हैं? सिंथेसाइजर का मतलब है जो उससे पहले एडम स्मिथ, बैबेज, बोल्टन, इन सब ने जो छोटी-छोटी टेक्निक्स दी थी, तो उन सबको इकट्ठा किया. ऐसा नहीं है कि इसने अपने हिसाब से कुछ नई टेक्निक बताई. पुरानी टेक्निक्स को इकट्ठा किया और उसकी रिप्रेजेंटेशन टेलर है. तो जितनी भी हिस्टोरिकली ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट के ऊपर साइंटिफिक टेक्निक्स आई हैं, दैट इज टेलर, और वो सारी आज के डेट में रेलेवेंट है. सो देखिए, दिस सिंथेसिस continues to stay relevant because it expresses a variety of scientific management principles and techniques. ठीक है. इतना कुछ होते हुए भी हम देखेंगे कि टेलर की थ्योरी के अंदर लोगों ने गलतियां निकाली. हालांकि अब जितने भी आगे थ्योरिस्ट आएंगे ना, हम पढ़ेंगे, पिछले थ्योरिस्ट को वो थोड़ा सा रिजेक्ट करने के चक्कर में रहते हैं या फिर उसके स्टैंड को बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं. इसी के बेसिस पे थ्योरी की एवोल्यूशन होती है ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट में. तो अब जैसे टेलर है, वो शॉप फ्लोर लेवल पे ज्यादा फोकस्ड है. उसका फोकस है वर्कर से बेटर काम कैसे लिया जाए फंक्शनल फोरमैनशिप के थ्रू. ठीक है. अब इसके आगे के थ्योरिस्ट आएंगे, वो हेनरी फ्यूल है फॉर एग्जांपल, सो यू फोकस अपॉन मैनेजमेंट. उसके आगे के थ्योरिस्ट आएंगे, वो बोलेंगे यार ये सब तो ठीक है बट ये कंप्लीट पिक्चर नहीं है, कुछ और भी चीजें चाहिए होती हैं. सो दिस वे दे विल कीप ऑन, बट देन देयर आर मेनी अदर थिंग्स
कुछ लोग टेलर को सिर्फ पार्शली स्टडी करते हैं, या टेलर की जो थ्योरीज है उनको पार्शली इंप्लीमेंट किया गया है। वो टाइम एंड मोशन स्टडीज तो लगा देंगे, पीस रेट सिस्टम तो लगा देंगे, लेकिन ये पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट नहीं लगाएंगे। सो many a times, due to partial reading or partial usage of Taylor's theory, a devil has been made out of Taylor by saying कि ये मशीनीकरण कर रहा है ह्यूमन बींग्स का, इट्स ट्राइंग टू ट्रीट ह्यूमन बींग्स लाइक मशीन्स। सो इस तरह से टेलर के ऊपर काफी लोगों ने क्रिटिसिज्म लेवल किया है, बट इट्स एन अनफाउंडेड क्रिटिसिज्म। इफ यू रीड टेलर holistically, you will find that there is humanistic aspect. He is concerned about the social welfare, he is concerned about the worker welfare, he is concerned about the maximum prosperity of both workers and employers. So the complete reading of Taylor's provides this. तो आपको भी यूपीएससी के अंदर एक लेवल ऑफ क्वेश्चन ये भी आता है, क्रिटिसिज्म ऑफ टेलर. So many people will say things against Taylor, but you have to defend him like this. ठीक है, so लिखिए critical aspect of Taylor. Critical aspect of Taylor. So Mary Parker Foley or MP Foley rejected the classical view of organization, rejected the classical view of organization as a set of structures, as a set of structures and functions, set of structures and functions which neglected the human aspect, set of structures and functions which neglected the human aspect. Similarly, many others have criticized Taylor. Many others have criticized Taylor for treating human beings, as merely cogs in a machine, as merely cogs in a machine. However, in reality, it is because of either incomplete reading, or partial implementation, either incomplete reading or partial implementation of Taylor's theory. Partial implementation of Taylor's theory by the industrial oligarchy. By the industrial oligarchy, जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस थे, उन्होंने सिर्फ इसमें से कुछ चीजें उठा के लागू की जो उनको अपने फायदे में लगती. Industrial oligarchy, so as to profit from scientific management, while at the same time neglecting the workers aspect, So वो deliberate है, टेलर की कोई गलती नहीं, ठीक है. So ब्रैकेट में लिखिए, on the other hand, Taylor in his theory has always tried to balance the human aspect with the machine,
by targeting maximum prosperity of both the worker and managers. Maximum prosperity of both workers and managers. दूसरा जो एस्पेक्ट है जो इसके क्रिटिक के अंदर आता है, सो देखिए, certain theorists have called Taylorism to be anti-trade union, as well as distorting collective bargaining. ट्रेड यूनियंस के अगेंस्ट है और कलेक्टिव बार्गेनिंग स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स जो है उसको खत्म करता है, पर ऐसा भी नहीं है। क्यों? लेट्स सी। सो individual in the organization is there to earn an economic incentive. Taylor and his performance-linked wage payment system is based upon individual rather than group performance. Hence, in a group, individual may lose control of his economic incentive. पूरा ग्रुप परफॉर्म करेगा तब किसी को बोनस मिलेगा, ये तो मुश्किल हो जाएगी क्योंकि ग्रुप में परफॉर्मेंस आए ना आए। तो इसलिए टेलर का जो सिस्टम है वो इंडिविजुअल है, आप परफॉर्म करोगे तो आपको मिलेगा, बाकी कोई करता है ना करे। So in a group, the individual loses control of his economic incentive. So even if the single individual performs, he can get extraordinary wage. He can get extraordinary wage. Okay. अब क्योंकि ये इंडिविजुअल सेंट्रिक है, इसी वजह से लोग इसको बोलते हैं कि भाई ये कलेक्टिव बार्गेनिंग को डिस्टॉर्ट करता है। क्यों? क्योंकि अब जो वर्कर यूनियन है वो तो काम स्लो कर नहीं सकते। एक इंडिविजुअल को लगेगा कि मैं अच्छे से काम कर लूं तो मुझे तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेज मिल ही रही है ना। अब ग्रुप के बेसिस पे कुछ नहीं हो रहा, अब इंडिविजुअल अपना फायदा नुकसान खुद तय कर लेगा। तो इससे जो यूनियंस हैं वो परेशान है और कुछ नहीं। ठीक है। सो as far as collective bargaining is concerned, it was being used more as a tool. It was being used more as a technique for systematic soldiering, rather than increasing organizational efficiency. So ये पहली बात है। दूसरा, Taylor was considered as anti-management. क्यों?
टेलर ने ये कहा कि भाई तुम तो लेजी मैनेजर हो, तो ये बोल के अब मैनेजर्स भी उसके खिलाफ हो गए कि भाई हमें लेजी क्यों बोल रहे हो तुम, है ना। सो लेकिन अकॉर्डिंग टू टेलर, many managers are not qualified to be managers. Many managers are not qualified to be managers and have become managers because of seniority rather than ability. And have become managers because of seniority rather than ability. For example, his concept of lazy manager, okay, this led to the managers coming together. This led to the managers coming together and criticizing Taylor about having a lowly view, Lowly, lowly view of manager and overburdening the managers. हमें lazy रहना पसंद है, आप मुझे burden मत करो. And overburdening the managers. Sir, please repeat. Anji, Sir, please repeat. this led to the managers coming together and criticizing Taylor for having a lowly view of managers and overburdening the managers. Lowly view of managers and overburdening the managers. Okay. Third, criticism है, Taylor confuses principle of analysis. Taylor confuses principle of analysis with principle of action. Principle of action. ये थर्ड क्रिटिसिज्म टेलर के अगेंस्ट लेवल होता है. कहने का क्या मतलब, टेलर जो है वो बहुत ज्यादा जॉब को डिवाइड करके एक एक पार्ट को एनालाइज करने के चक्कर में रहता है. जैसे फोरमैन भी है तो 4 प्लानिंग वाले हैं और 4 एग्जीक्यूशन वाले हैं. सो ही इज ऑब्सेस्ड विद स्पेशलाइजेशन टू द माइन्यूटेस्ट डिटेल, टाइम एंड मोशन स्टडीज, एवरीथिंग. This is this planning and everything. This is the principle of analysis. And the execution part, जिसमें से actual काम होना है, that is the principle of action. So dividing this much, work is not considered as good, because जो division of work है, वो up to a certain order ही ठीक रहती है. अगर मैं जो करने वाला हूं, मैं वो प्लान नहीं कर सकता, तो मैं ढंग से एग्जीक्यूट भी नहीं कर सकता. ठीक है. तो इस वजह से ओवर emphasis on specialization, over emphasis on division is bad. और ये वाकई में सत्य भी है, ये क्रिटिसिज्म जायज है. So देखिए, this criticism is well established because Taylor is obsessed with specialization, to the minutest detail. Specialization to the minutest detail. Okay. Even at the shop floor level, this is an example. Even at the shop floor level, he is dividing the foremen into planning and execution. Thus separating analysis from work.
और थॉट फ्रॉम एक्शन, मैं करूं सोचूं नहीं, ये तो गलत है ना. Analysis is what? It's thought, and this is action, which is not the ideal level. It is not the ideal level of division. इतनी So ज़्यादा please division repeat. of Execution कहाँ into select planning and execution. Into planning and execution, thus or separating. yeah, thought from action. Thus separating thought from action, which is not an ideal division of work. Which is not an ideal division of work. Okay. लास्ट इसके अगेंस्ट जो क्रिटिसिज्म आता है वो बिहेवियरल थ्योरिस्ट ने दिया है. आगे जाके पढ़ेंगे बिहेवियरल थ्योरिस्ट कौन होते हैं. सो बिहेवियरल थ्योरिस्ट्स चार्ज्ड टेलर for sacrificing freedom, initiative, intelligence, and responsibility. Sacrificing freedom, initiative, responsibility, and intelligence of worker for the sake of standardization and establishment of one best way जो टेलर को लगेगा कि हाँ ये सबसे बेस्ट तरीका है कुछ काम करने का, तो वही स्टैंडर्डाइजेशन हो और वन बेस्ट वे. और ये भी वेल फाउंडेड क्रिटिसिज्म है कि वन बेस्ट वे के चक्कर में ये सारा कुछ टेलर ने वाकई में छोड़ा. So this criticism is also well established. वाकई में टेलर में ये कमी थी. So this completes one theorist, that is Frederick Winslow Taylor, for you for public administration. किसी भी theorist को बस हमने इस तरह से वर्कआउट करना है. ठीक है. इसके आगे के जो theorist हैं उनको इकट्ठा एक ग्रुप में लिखा जाता है. They are called as classical theorists in public administration. So they include people like Henry Fayol, Max Weber, okay, and there is Gulick and Urwick. So इन सब theorist को एक ही ब्रैकेट में रखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं. इसमें से जो फ्योल है he is more into the management part. Gulick and Urwick जो हैं they are more into the organizational structure, and Max Weber is talking specifically about bureaucracy. So that is the government organization. So इनके बारे में अब हम अगले लेक्चर में बात करेंगे. So this lecture particularly completes one particular section, that is scientific management movement. अब आपको इसके साथ रिगार्डिंग अगर कोई डाउट्स हैं तो प्लीज पूछिए.